Hello students, the question is a particle of mass m is projected with a velocity v equals to k v subscript e where k is less than 1 from the surface of the earth where ve is the escape velocity. The maximum height above the surface reached by the particle is option A r bracket k minus k upon 1 minus k whole square, option B r bracket k upon 1 plus k whole square, option C r square k upon 1 plus k, and option D r k square upon 1 minus k square. So the problem is based upon the topic gravitation, and this problem is asked in one of the year of questions of NEET exam. So in this particular problem, the basic concept used is the law of conservation of energy. Law of conservation of energy we apply at two different points. The situation is like this. Now there is a particle at the surface of the earth. Suppose this is the particle at the surface of the earth. For example, we take the mass of earth as capital M, the radius of earth as capital R, mass of the particle as small m, and this particle is projected upwards with the velocity v, which is given by kVe. Now, since this k is less than 1, it means that the velocity by which it is projected upward is less than the escape velocity. So it means that it returns back and reaches a certain maximum point and does not go out of the gravitation field of the earth. So the situation is like this. Now we know that the gravitation, the topic of gravitation, that the escape velocity is given by 2 gm upon r, square root of 2 gm upon r. This is the formula for the escape velocity. Now we are going to apply the law of conservation of energy at two different points. Let us suppose initially the particle is at the position A, and when it is projected upward, it reaches a certain height, maximum height, and call it as point B. And the distance between A and B, which is the height reached, is h. So this is the situation. Now at the maximum height, that is at point B, the velocity, the final velocity of the particle becomes zero momentarily. So we are going to apply the total mechanical energy as conserved at these 2 points, point A and point B. So we can say that total mechanical energy at point A is equal to total mechanical energy at point B. Now the total mechanical energy is the sum of kinetic and potential energy. So we can say that kinetic energy at point A plus potential energy at point A is equal to kinetic energy at point B plus potential energy at point B. Now the kinetic energy at point A is half mv square. This is half mv square. Now v here, v square, v here is related to k and ve. So we can calculate this v. V is equal to k times ve. So v square is k square ve square. Now putting this value of ve in this equation, we get k square into 2 gm upon r. This square root sign cancels because we are squaring it. So k square 2 gm upon r is the value of v square, which we put here in the next step. Now the potential energy is given by minus gm small m upon r at the surface of the earth. This is the formula for the potential energy. The radius of earth is r. So at the point A, the potential energy is given by minus g capital M small m upon r, where capital M is the mass of the earth and small m is the mass of the particle. Now this is equal to, the right hand side is equal to the kinetic energy at point B. So the at the point B, the speed becomes zero, so the kinetic energy is also zero. So we put here as zero. Now the potential energy at point B is given by minus g capital M small m upon
r plus h, because from the center of the earth the total distance is this r plus this h, which is equal to r plus h. So this is the formula for the potential energy. Now we can easily see that this m cancels. We take the m as common here in the left hand side and cancels with this small m. So the small m cancels here. Now we are going to put this value of v square from, let us call this as equation 1. V square is equal to k square 2gm upon r. We put this value of v square here. So we get half into k square 2gm upon r minus g capital M upon r is equal to minus g capital M upon r plus h. Now this 2 also cancels with this particular 2. Now we can also take capital M as common in these two terms and cancel with the right hand side term, this m. So this capital M also cancels out and we get this value as, and g also cancels out after taking common. G also cancels out. So we get this value as k square upon r minus 1 upon r is equal to minus 1 upon r plus h. So this is minus k square upon r and minus 1 upon r is equal to minus 1 upon r plus h. Now we can do the calculation here. So this, between these two terms 1 upon r is common. We get here as k square minus 1 is equal to minus 1 upon r plus h. Now we can cross multiply. So we get r plus h is equal to minus r upon k square minus 1. And in the next step, we can write down as h equals to minus r upon k square minus 1 and minus r. Now we can take common k square minus 1. Here we get minus r and minus r k square and plus r. Now this minus r cancels with this plus r and we get here this value as minus r k square upon k square minus 1. Now we can take minus as common and cancel this minus sign. So we get this value as r k square upon 1 minus k square. You can easily see that option D is correct here. So इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जिसका कि मास m है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है एक वेलोसिटी v से जो बराबर है स्मॉल v इक्वल्स टू k v सबस्क्रिप्ट e. यहाँ पे ve है एस्केप वेलोसिटी और k लेस देन 1 है, इसका मतलब पार्टिकल एस्केप नहीं होगा, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर नहीं जाएगा. As the maximum height above the surface reached by the particle is, यहाँ पे पूछा गया है कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कुछ कंसेप्ट्स जो यूज हो रहे हैं. सबसे पहला कंसेप्ट यूज हो रहा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स या फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं. एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज हो रहा है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, जहाँ की कैपिटल एम एक पर्टिकुलर पहला मास यानी अर्थ का मास है और स्मॉल एम दूसरा मास यानी स्मॉल एम पार्टिकल का मास है और आर है इनके बीच की दूरी. तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सरफेस ए जहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेनी है जो कि सम होगी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का. उसे बराबर रख देना है हमें पॉइंट बी पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है. बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी. ए पॉइंट जहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पे v जो है बराबर होगा k इंटू वी ई के और वी ई बराबर है स्क्वायर रूट 2g कैपिटल m अपॉन r. तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2g m अपॉन r. वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे k स्क्वायर 2g m अपॉन r. ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में जहाँ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए निकाल रहे हैं हम.
देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और राइट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी जो कि 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकालने के लिए माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड बी। ओ इज द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट बी तक की दूरी जो कि बराबर है आर प्लस एच के। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को हम कैंसिल करेंगे, लाइक स्मॉल एम को पहले स्टेप में हम कैंसिल करेंगे दोनों साइड्स में। उसके बाद हम 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। उसके बाद हम कैपिटल एम को कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में उसको भी कैंसिल करेंगे। जी को भी हम कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के कैपिटल जी से, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, उससे कैंसिल करेंगे। इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में काफी हद तक आ जाती है। फाइनल एम है हमारा मैक्सिमम हाइट निकालना, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि हमें एच मिल जाए। यहाँ पे इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आर प्लस एच को लेफ्ट हैंड साइड में, आर को मल्टीप्लाई किया हमने राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर की तरफ, और के स्क्वायर माइनस वन को हमने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर की तरफ। सिंप्लीफाई किया फर्दर एलसीएम लेके, और फाइनल आंसर हमने निकाला आर के स्क्वायर अपॉन वन माइनस के स्क्वायर। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।